generated claims, and the second type of claim are your manual claims. So when it comes to your system generated claims, there are three types of claims. They're your trade offer claims, they're SDR, and they're rentals. Now, in this particular scenario, we'll be talking about the trade offer claim. Trade offer claim is a very crucial type of claim which is required by the distributor for their distribution operations. यहाँ पे होता क्या है? If I can walk you through the module. So when you're requesting a claim, I'll select a distributor. Here we can see a list of all the claims that a distributor can raise. Okay? In this particular situation, we'll be talking about the trade offer claim. अच्छा, अब ये क्या होता है कि ट्रेड ऑफर क्लेम पहले ऐसा होता था कि यू हैव द क्लेम टाइप दैट इज द ट्रेड ऑफर एंड द अमाउंट, ट्रेड ऑफर की अमाउंट यहाँ पे आ रही होती है, एंड देन यू कैन डीसेलेक्ट और सिलेक्ट द क्लेम टाइप कि आपने ये वाला क्लेम रेज करना है, आपने ये वाला क्लेम रेज नहीं करना. सही है. What someone was talking about was कि अब हम added more granularity to this particular type of claim कि अभी तो क्या आ रहा होता है, the value, the amount here is the aggregation of all the promotions that are applied in the system. ठीक है, जो कि distributor claim कर सकता है. But now when we click on the trade offer claim, we can see a list of promotions that are contributing towards that particular amount. तो ये जो amounts हैं, ये sum होके ये amount बना रही है, that will be the total amount of the trade offer claim. अब ये है कि the user has the feasibility to select and deselect the claims. अच्छा, if you select the select all option, आपके सारे claims जो हैं वो trade offer के select हो जाएंगे and then they can be sent for approval. But if you deselect this and select particular types of promotions, तो फिर क्या होगा? In this particular scenario, ये value sum होके आपका ये particular claim generate हो रहा होगा. Now I'll be showing this by sending this for approval. We'll move on to the approval screen. Select the same distributor. And then we can see कि जो हमने दो amount select की थी, उसका sum यहाँ पे होके आ रहा है. The two promotions that we selected, उनका sum यहाँ पे होके आ रहा है. And वो कौन सी दो promotions थी, उसकी visibility के लिए we can download this particular report and see कि कौन सी claims हमारे हो रहे हैं नहीं हो रहे. ठीक है, we can execute this. Select a particular checkbox. So this particular screen would enable us to view the type of promotions जो हमने select करके आगे trade offer के लिए भेजी थी. But then again, the point here is कि this is a setting based feature. So for those of you who do not want this segregation, can still see अभी वाले जो claim requisition की screen होती है, where trade offer की aggregated accumulated amount आ रही होती है, that you can see that the total amount is there. But if you want to see the further granular level की segregation, तो आप setting enable कराएं and you can see कि कौन सी promotions enabled हैं, कौन सी promotions जो हैं वो इस value को contribute कर रही हैं, towards contribute कर रही हैं, and then you can select or deselect them and then send them. Other than that, Salesflo से out होना चाहिए. Salesflo से out नहीं होना चाहिए. तब stock Salesflo से out नहीं होगा. और अगर Salesflo से out नहीं हुआ तो बाकी हमको खाली में बनी रहेगी. जमा हो गए कल Can everybody please mute their microphones? ठीक है, देख. Yeah. So अब ये होगा कि now since जो मैंने दो promotions select करके आगे भेजी थी for approval के लिए, I can't see those promotions anymore because they've been sent for approval. So this is how the claim segregation works. It'll be setting based. If you don't want to see the segregation, you won't be able to view it. अगर आपके पास enabled होगा, then you will be able to see the breakdown, the promotions contributing towards that particular promotion. So this is the whole activity-wise claim segregation का demo. And then over to Saman, and she can move on to the next feature. Thank you, Zoha. Yes. Yeah, so I'll proceed on to the next feature that we worked on. It's regarding SKU bundles.
I'll explain further कि SKU bundle होते क्या हैं. So हमारे पास एक बहुत common use case जो कि अक्सर हमसे customers discuss भी करते थे and हमारे पास आया भी ये कि आप लोगों के कुछ certain distributions में ये होता है कि एक specific kind of आपका special SKU बनता है जिसके अंदर जैसे for example SKU A है but within the same packing एक unit of SKU B है. सही है. So it's a special bundle SKU that is available at the distribution as a physical stock जो कि आपका for ordering purposes use होता है. सही है. Now to cater that scenario और उस bundle को हमने system में किस तरीके से create करना है that was हम लोगों ने काफी पहले उसके ऊपर सोचा कि हम promotions के through दें but then promotions में हमारे पास stock management का मसला आता because we had to manage the FOC SKU separately and the base SKU separately. ठीक है. So what we've done now, we've introduced a special kind of SKU type that is a combination SKU and उसके ऊपर आप लोग basically 2 SKUs का mixture एक ही SKU के अंदर आप खोल सकते हैं. ठीक है. And इसका special usage इस केस में होता है कि आपके normal SKU की तो price लगेगी. So for example अगर 100 rupees है तो वो तो आपका as a normal carton की price जाएगी. बट जो FOC SKU है सिर्फ उसका टैक्स जो है वो आपका इंक्लूड हो रहा होगा इन द इनवॉइस. ठीक है. So this is what we worked on and Zoha will be proceeding on with the demo on how do we create SKU bundles and its reflection in invoice and ordering के किस तरह से होनी है किस तरह से invoice पे दिखेगा. ठीक है. So over to you Zoha. I request everyone please mute their mics. Yeah. Thank you. I'll be sharing my screen now. Right, so before getting into the demo, I'd like to briefly touch upon what Saman already mentioned. So she talked about how it's a hassle to maintain the inventory of an FOC SKU when वो कोई base SKU के साथ अगर वो attach होके जा रहा होता है तो promotion के साथ उसको manage करना is an issue in terms of inventory management. So in order to cater to that, somebody still has their microphone on. So in order to cater to that particular scenario, जिधर आपकी inventory management hassle ना हो और आपके जो base SKU है उसके साथ आपके FOC SKUs भी cater हो जाए, we built a functionality where you can create SKU bundles. So now previously system में क्या हो रहा था that you could create SKUs individually. That is individual SKUs की आप information define करो. While creating the SKU, you define the pricing and then you make an SKU in the system. This particular situation, what we have now created is that you can link a base SKU with a FOC SKU. Iski inventory management will be separate. So let's assume SKU tuck is a SKU which has its separate inventory. SKU Prince Biscuit is an SKU which has its separate inventory. And then I've created a bundle SKU जिसमें tuck जो है वो मेरा base SKU होगा. And मेरा Prince Biscuit would be the free unit that be going with the tuck का SKU. तो ये जो है ना मेरा एक bundle create हो जाएगा. तो पहले ये था कि we didn't have the functionality of creating this bundle in the system. Now we can create a bundle in the system that is हम दो SKUs को link कर सकते हैं. So now that I've explained what a combination or what a bundle SKU is, I will show you how we can create it in the system. अच्छा. When we're creating the SKU, this will be the normal flow of the system. That is जो अभी होता है. You will make a SKU. मैंने tuck suppose tuck मेरा जो base SKU है वो मैंने उसकी information fill कर दी, and I'll write its name as tuck, and then I move on. So I fill in this information like the normal procedure while we're creating an SKU. सही है. उसके बाद we fill in उसकी price, whatever the price of the base SKU is, and a base in our case is the box जिसके साथ
वो free radical जा रहा होता है. And then we click on add a combination SKU का button. What this does is it enables us to attach already existing SKU in the system with the base SKU. ठीक है, तो मैंने I'll search an SKU. Let's say I attach this and I specify the quantity, right? अब नीचे there'll be a message that tell me कि what exactly would be in that virtual box. सही है? So it says that it's a combination SKU with 1 unit of tuck, जो ऊपर 1 unit tuck का define हुआ है, with 2 units of additional. मैंने कहा कि मेरा free जो है वो daily और month जाना चाहिए इसके साथ, and then I add the SKU, right? After I add the SKU, I'll show you an SKU that I've already created and performed transactions on, which was this tuck bundle pack with prints. ठीक है? So this is an SKU जो मैंने पूरा ये procedure follow किया, tuck की मैंने base information डाली. I attached a free unit as well जो मेरे tuck के box के साथ जा रहा होगा, and I've created a bundle. अब क्या होता है, like just like the normal procedure, what happens is when you create an SKU, the second step is to assort that SKU on channels and distributions so that they're visible for the distributor to buy. That is कि उसकी primary assortment, secondary assortment हुई भी हो, उसकी receiving हुई भी हो, and then I have that SKU for me to buy when I'm placing the secondary order, right? So अभी तक का हमने क्या किया? We've created the bundle SKU and we've assorted. Let's assume we've assorted it and it's there for us to buy. So what will happen next? So the next step that you're supposed to do is that you have to place an order of that particular SKU, right? So you go on to the secondary order key screen. You select distributor. I select a distributor. I select a store. I select the SKU. So it was, I remember it was stock bundle pack with prints. ठीक है, and I ordered एक इसका carton. ठीक है, and I placed the secondary order. Right. Now the next thing I would do is that इसका stock allocation का process follow होगा, which is exactly the same जो अभी आपके normal situation में follow हो रहा होता है. Then the next step is कि आपको ना देखना होगा invoice पे any user would want the visibility कि मेरा जो actual base SKU था उसकी क्या price थी, and then the other SKU जो कि मेरा free SKU था उसकी सिर्फ tax price आनी चाहिए आपकी invoice में. So what I'll do is I'll print an invoice and I'll show you where the SKU is where the amount is being shown of the SKU. सही है, तो आपका ना जो आपका base SKU था उसका मैंने एक carton order किया and I can see कि मेरा वो उसके पूरा उसके ऊपर जो उसकी quantity आ रही है उसके ऊपर जो tax applicable है and the total amount of that particular base SKU. उसके बाद जो हमारा जो free SKU है that is being attached to the base SKU, उसकी आपके पास कोई retail price, trade price नहीं होगी, पर उसकी tax price okay. Is my screen visible now? So I'll have to share the invoice screen. Okay, so when we click on to the invoice, we can see कि invoice print हो गई है, सही है. This invoice will have two SKU के lines, two rows. एक आपका row होगी जो आपकी base price की होगी, and the other row होगी कि जो आपका free SKU attach हुआ है, उसकी सिर्फ tax price add हो रही होगी. So you'll have your SKU base price summed up with the tax price of the FOC, and आपका total amount इस तरह आपकी invoice पे calculate होगा. Microphone is so eventually what will happen is कि ये feature would help you see कि आपके जो free unit के इसमें जो free unit जा रहा है FOC की उसमें मद में उसकी quantity कहाँ mention हो रही है जो this is happening जब हम product में जाते हैं और जब हम SKU create कर रहे होते हैं. no, मुझे invoice पे नजर नहीं आ रहा है. free unit जो गया है invoice में prints के साथ I think tag के साथ prints आपने free दिया है ना, तो उसकी unit नजर नहीं आ रहा है मुझे.
तो वो इनवॉइस फॉर्मेट पे भी डिपेंड करता है कि आप देखना चाह रहे हैं या नहीं, बट सो ये टेस्ट इंस्टेंस पे हमारा बना हुआ है ना, इसलिए इसमें है नहीं कॉन्फ़िगर्ड, बट इफ यू वांट दैट विजिबिलिटी एज वेल देन वी कैन गिव इट। अदरवाइज हम जब प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं उसमें हम उसमें ऐड करते हैं कितने यूनिट्स हैं। फिर इसको ज़ाहिर है लोड फॉर्म के अंदर भी इसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब स्टॉक आउट होगा गोडाउन से तो उसमें तो फ्री यूनिट भी जाएगा ना, तो उसकी विजिबिलिटी है लोड फॉर्म में, अगर इनवाइस में नहीं है आ रही है। अच्छा, we'll address your questions ना वैसे at the end of the session, ताकि इसको हम wrap up कर ले, फिर हम आपके end में ये जवाब दे देते हैं इसके, ठीक है? ओके ओके। हाँ, before so we rather not disrupt the flow of the demo and we can answer all the questions at the end. लेकिन as someone mentioned कि ये होता है कि अभी ना there's a particular invoice format that is selected for this particular view. तो ये इसमें ये है कि इसमें what we wanted to show is that आपका जो actual SKU है उसकी मेन प्राइस आ रही होगी, एंड जो आपका फ्री SKU है उसकी टैक्स प्राइस ऐड होकर आपको टोटल प्राइस दिख रही होगी। Now other things that you would want कि इसके क्वांटिटी आ रही हो and base price की क्या क्वांटिटी आ रही हो, any other thing that you would want to see on the invoice can be altered or managed through the invoice format that has been set from the settings. ठीक है? The main purpose of this is to have better stock reconciliation when it comes to managing FOC SKUs with or without promotions. So with promotions hassle हो रहा है, issue बन रहा है stock का track रखना, so it's better that we have this combo SKU bundle SKU feature in place that enable us कि इसकी separate inventory maintain हो, इसका सब कुछ separate track record, transaction का record separate हो, so that it's better maintained in the system. Now the question that Zubair particularly asked would be addressed at the end. We can move on to the next feature now. Saman? Yeah, okay. Let me share my screen. Okay, so the next feature that we worked on is basically regarding something regarding FBR filing. So आप लोगों के ज़ाहिर at the end of the year जब tax returns होते हैं for any invoices जो कि आपकी registered stores के ऊपर गई होती हैं, तो हमें काफ़ी requests भी आई थी कस्टमर से कि हमें एक अपना invoice का नंबर चाहिए invoice के ऊपर, ताकि हम उससे FBR की filing हमारी easier हो सके, ठीक है? So एक सीरीज होता है जो कंपनीज के पास चल रहा होता है अपना इनवॉइस काउंट जो कि वो यूज कर रही होती हैं फॉर टैक्स रिटर्न्स। सो we've helped them basically by providing this custom number. So जो आपका नॉर्मल सेल्सो का इनवॉइस नंबर होता है वो तो वैसे ही आपका रहेगा, but along with that we've given a custom invoice number that will be used for FBR tax returns filing. And this is again a setting based feature जिसमें दो type of settings हैं कि आप इसको add invoice generation पे number assign करना चाह रहे हैं या load form settlement के ऊपर number assign करना चाह रहे हैं इसका। तो we'll walk you through the demo and we'll tell you more in detail कि किस time पे हम क्या number generate करा रहे होते हैं, ठीक है? Yep. Zuha, you may share your screen. Yeah, I'll be sharing my screen now. Sorry, I was on mute. Okay, so a bit of context and touching upon what Saman mentioned. Okay, this is a feature that enables the customer to set their custom invoice numbers. That is कि आपके पास ना दो settings available होंगी. You can either set your invoice numbers या आप अपने invoice number की generation कर सकते हो while the invoice is generated, that is on invoice generation पे आप कर सकते हो. The second option is कि जब आपका load form settle हो रहा हो ना, then you can have your invoice number generated. So I'll tell you, I'll briefly mention why the two options are there and what are the pros of each of the options. So पहला option ये है कि जो मैं आपको दिखा दूं कि आपकी जो invoice होती है उसमें यह है कि जैसे ही मैंने ये invoice अभी this is open, so the status of this particular invoice is open.
दैट इज कि अभी ये सेटल नहीं हुई है एंड द इनवॉइस नंबर हैज बीन जनरेटेड. तो इन दैट केस क्या होगा, ये आपकी पहली वाली सेटिंग एनेबल्ड है. दैट इज एज सून एज द इनवॉइस इज जनरेटेड आपके पास एक इनवॉइस नंबर जो है वो क्रिएट हो गया. ठीक है. दूसरा आपका केस ये, अच्छा इसमें ये होता है कि अगर आपका इनवॉइस नंबर ऑलरेडी क्रिएट हो गया है ना, तो इन केस ऑफ योर ऑर्डर बीइंग रीडिलीवर्ड और दिस इनवॉइस बीइंग कैंसिल्ड, तो ये क्या होगा, दिस पर्टिकुलर नंबर इज ऑलरेडी टेकन. तो लेट्स अस्यूम आपके पास 5 इनवॉइसेस थी, 1 2 3 4 5. 2 ऑफ देम आपने 5 इनवॉइसेस जनरेट की. ठीक है. 2 ऑफ देम आपका बिल्कुल ऑर्डर डिलीवर हो गया. 3 of them are either cancelled or redelivered. तो अब जो next invoice number generate होगा वो number 6 होगा because the first 5 numbers are already taken. तो इससे क्या होता है कि इसका फायदा ये है that the benefit of it would be कि आपकी जो redelivered और जो आपकी terminated cancelled invoices हैं उनका भी you do have a number allocated to it. सही है, and you can go back to it, reference होता है उसका. But the problem here would be कि इधर जो है ना आपका sequence disrupt हो रहा होगा. That is कि अगर आपका first 2 orders were fine, they were placed and they were settled, the last 3 orders जो कि redeliver हो गया, terminate हो गया, तो जो आपका next order number generate होगा that will be number 6, right? So इस तरह ना आपका जो invoice का number है बढ़ता जाएगा and there will be no particular sequence to it, right? So if you go on, but on the plus side, you will have your redelivered and your cancelled TB invoice numbers there for your reference. The second setting would be that you have your invoice number being generated on settlement. That is, जब आपका order settle हो रहा है तब आपकी invoice number generate हो रही है. This would mean that when the invoice is generated, the number won't be there. The invoice number won't be there until the invoice is settled. इससे ये होगा कि there will be a sequence that we maintain कि आपकी सारी settled invoices एक sequence में आ रही होंगी. Okay, these are the number of invoices that have been settled. The number would be smaller because obviously numbers take up नहीं हो रहे होंगे और एक के बाद एक आ रहा होगा. अच्छा, अब this particular instance, the one जिस पे मैं demo दे रही हूँ, इस पे the first setting has been enabled. That is कि जब आप invoice create कर रहे होते हैं, on invoice generation आपका invoice number आ जाता है. And you can see the invoice number at the top, which I'll share my screen and show. So this is the invoice और इसमें ना आपने invoice generate की, it's an open invoice and इसका invoice number इधर आ रहा है. But अगर मेरे पास second वाली condition enabled होती, that is कि मेरे invoice generation पे नहीं, मेरे settlement पे आना चाहिए. So that particular invoice, if opened, would be the invoice number won't be there और सिर्फ service पे होगा. ठीक है. So this is the concept behind the custom invoice number generation on basis of different settings. But again, this is a backend setting and it's a one-time setting. It won't be the case कि आपने एक बार एक तरह की setting enable कराई है, because then again that will cause आपके invoice number में discrepancies. That is कि पहले आपने settle invoice generation पे करा दी and then you scratch that and you say, oh, I need it on invoice settlement. फिर भी आपका number disrupt हो जाएगा. So it will be a backend setting, it will be a one-time setting. You'll be able to set कि आपने किस चीज पे करना है, on either invoice generation or on load form settlement, and then you'll be able to manage the entire instance through that. So that will be the demo for this. Over to Saman now. Thank you, Zuhra. Okay. Yeah, so moving on to the second part of our agenda, basically the mobile features that we worked on, we'll be talking about that. And this is the first time that we'll be talking about any mobile developments over here. So we're really excited about your feedback as well on it. So let's move on. So हम थोड़ा सा मैं ऐप के बारे में update दूँ that we've basically upgraded the architecture, that is we've moved to Kotlin recently, and इसके लिए हमने आपको communicate भी किया था that हम Kotlin पे move कर रहे हैं. That is the official language for Android now, and it is an architectural improvement है, and इससे application की speed भी better होती है and better performance है इसकी. ठीक है, but the features that we've now worked on, those are regarding UI and UX updates हैं, थोड़ी सी order booker की life में आसानी पैदा करने के लिए, because at the end of the day
अगर हम देखें तो हमारा एंड यूजर जो है वो ऑर्डर बुक ही है, जो कि फील्ड में जा रहा होता है एंड ऑर्डर बुकिंग कर रहा होता है, ऑर्डर्स लेके आ रहा होता है। सो हाउ डू वी इंश्योर कि उसकी जिंदगी थोड़ी सुकून हुए, उसके कम क्लिक्स हुए, उसको ज्यादा विजिबिलिटी हुए ऑन whatever SKUs that he has to buy. So with respect to that, we worked on some of the updates. So top selling SKUs की visibility हमने बेहतर की है. We've worked something regarding perfect stores की classifications, जो customers हमारे perfect stores use कर रहे हैं उनकी classification, now that will be clearly visible in the application to the order booker. ठीक है. बेटर डेफिनेशन ऑफ मस्ट सेल एसकेयूज. सबसे पहले आप लोगों को स्पेसिफिकली एक टैब में जाके देखना पड़ता था कि आपके मस्ट सेल एसकेयूज कौन से हैं, वहां से जाके बुक करना पड़ता था. बट नाउ आपके नॉर्मल एसकेयूज के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि ये आपका मस्ट सेल एसक्यू है, सो आपने इसको बुक करना है. ठीक है. एंड देन हमने कुछ जो वैल्यू बाइंग ग्राफ आ रहा होता था हमारे स्टोर के बेसिस पे, उस पे भी कुछ हमने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, ताकि ऑर्डर बुकर को एग्जैक्टली पता चल जाए कि booking an above average order or a below average order, and how he should improve his order booking quality. Okay, so Salman will be giving you the demo for the application, and then later you guys can communicate it to your order booking team भी कि ये चीजें आई हैं, इसको हम किस तरीके से utilize कर सकते हैं. So over to Salman. Hi everyone. So we made few changes to enhance the experience of the booker. So just give me a few minutes. I'm sharing my screen. Just give us a couple of minutes. We're actually, Zoom isn't allowing us to share the screen. That's why Salman is unable to cast it. Just give us a couple of minutes. So Salman would be talking about the features while I try to share the screen. So Salman, you can start with the features and I'll share the screen then.
Hi everyone. So there's some problem in screen sharing, so we are working on it. So let me just brief about the changes that we will be releasing. So the first change is the accessibility of call and direction icon. So previously the call and direction icon was quite hidden in the app. The order bookers has to visit inside the store to get the call icon and the direction icon. So we made it more visible, and so obviously for the order bookers की आसानी हो जाती है कि उनके number of clicks reduce हो जाते हैं. So the next feature that someone also mentioned is the visibility of perfect stores. So अब हम web panel से perfect store mark कर सकते हैं for a company जो आपके top tier stores होते हैं, and that would be visible on the application as well. So उससे ये होता है कि order bookers would know beforehand कि आपके perfect store exactly हैं कौन से and उसको किस तरह deal करना. And जिन companies को perfect store mark नहीं करना तो obviously this is a dynamic setting, so वो उसको ignore कर सकते हैं. And the third feature we added is the sales trend graph, which I will be showing जब आपको demo दिखाऊंगा. So that basically graph shows exactly कि आपके stores का पिछले हफ्तों में आपके sales का trend क्या रहा है. And whenever there is a sales trend is upwards, तो आपका जो color है पूरे graph को green हो जाता है. And when there is a loss in the sales, तो आपका जो color है वो that is red and वो downward show होता है. This is a really powerful insight for the order bookers. And apart from this, we have also highlighted the top selling SKUs in application. So application के अंदर आपके जो भी आपके top selling SKUs होते हैं, system खुद ही identify कर लेता है कि exactly distribution पे आपके top selling SKUs कौन से हैं, and वो highlight हो जाता है application में. So with them being highlighted, order bookers को आसानी होती है कि exactly पता करने में कि आपके SKUs top selling है कौन से, and उनकी further से sales drive कर सकते हैं. And the last change that I would like to highlight is the must sell visibility on application. So पहले must sell SKUs जो होते थे आपके पहले अलग एक टैब आ रहा होता था must sell का. Now हर SKU के against आपके must sell का लेबल होगा, so order bookers को exactly पता होगा कि आपके must sell SKUs कौन से हैं. And बस मैं आपको ये सारी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, we are just sharing a screen to give you a live. So there were some technical problems in sharing a screen, so kindly just wait few minutes. We are just sharing the screen. Meanwhile, can we also have questions in the chat box for us to answer? Regarding Zubair's question, I'm also attaching a screenshot. Their FOC जो आपका unit है उसकी amount आ रही होती है और उसकी quantity आ रही होती है, तो I'll attach the screenshot in the chat window for Zubair to view. Now I've changed the format और आप quantity भी देख सकते हैं और आप वो भी देख सकते हैं, the amount भी देख सकते हैं. Other than that, if you guys have any questions, तो आप लोग chat window में populate कर दें, so that without wasting any time, we can get into that right after Salman has sorted the screen sharing issue. Who else sharing now? नहीं. Let's unmute. Hi everyone, so I hope you can see my screen now. It is visible, right? Yes, it's visible now. So sorry for the delay. So yeah, so the first change that we did is the visibility of the location and call icon.
सो पहले ये होता था कि ऑर्डर बुकर्स को स्टोर पे जाके विजिट करना होता था एंड देन वहाँ जाके उनको लोकेशन और कॉल आइकन विजिबल होते थे. सो आई थिंक इस पे नंबर ऑफ स्टेप्स जो आपके ऑर्डर बुकर्स के लिए ऐड हो जाते हैं, जो उनकी आपने एक तरीके से उनका एक्सपीरियंस कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो वो चीज़ हमने इस चीज़ से इम्प्रूव की है. सो उनको हर स्टोर के अगेंस्ट यहाँ डायरेक्शन का भी आइकन होगा, कॉल का भी आइकन होगा, वो यहीं से उनको कॉल कर सकते हैं. And apart from this, you can see there is an information logo as well. And if I tap on that, तो इस पे स्टोर की आपकी डिटेल्स आ जाती हैं. So before even visiting a store, order bookers को स्टोर की इंफॉर्मेशन इससे मिल सकती है एंड उसका जो बाइंग ट्रेंड जा रहा है ओवर द लास्ट पास्ट वीक्स इससे देख सकते हैं. Apart from this, there is also a perfect store visibility as you can see. So companies अपने web panel अपने जो टॉप टीयर स्टोर्स होते हैं दे कैन मार्क देम एज परफेक्ट स्टोर्स एंड वो परफेक्ट स्टोर की विजिबिलिटी एप्लीकेशन पे आ रही होती है. सो ऑर्डर बुकर्स नो बिफोर हैंड एग्जैक्टली के परफेक्ट स्टोर्स कौन से हैं एंड ऑब्वियसली इफ दे हैव द विजिबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्टोर्स दे वुड नो कि उनसे किस तरह डील करना. एंड दिस इज ऑब्वियसली अ डायनेमिक सेटिंग, इट्स नॉट मैंडेटरी. जिन कंपनीज को परफेक्ट स्टोर मार्क नहीं करना तो उसमें ऑब्वियसली कोई विजिबिलिटी नहीं होती. So let me highlight the other features. Let me visit this store. So this is a really powerful graph that we have added. So इस पे ये होता है कि आपकी जो last 6 week की sales है वो इस ग्राफ पे नजर आ रही है and आपकी जो इस वीक की सेल है वो भी इस ग्राफ पे नजर आ रही है. एंड यू कैन सी जो टॉप राइट में आपको परसेंटेज नजर आ रही है विद अ डाउनवर्ड एरो, वो ये दिखा रहा है बेसिकली कि आपकी सेल इस पर्टिकुलर वीक में इंक्लूडिंग दिस ऑर्डर वो गिर गई है कंपेयर टू द लास्ट वीक. बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से इफ आई ऐड दिस एसक्यू, लेट्स से 1 कार्टन, नाउ यू कैन सी जो आपका डाउनवर्ड एरो था वो आपका अब अपवर्ड की तरफ चला गया एंड द कलर हैज चेंज फ्रॉम रेड टू ग्रीन. So this is really powerful information for order bookers. उनको exactly पता होगा कि कब वो एवरेज से बिलो जा रहे हैं, कब वो एवरेज से ज़्यादा जा रहे हैं. So this is really insightful for the order bookers. So this is a ग्राफ जो है ऑर्डर बेस्ड है या सेल्स कंफर्म सेल्स बेस्ड पर है? this is order based, order के based. Okay, Salman, you may proceed. So apart from this, अब हमने एक और एक फीचर that is the highlighting of the top selling SKUs in application. So डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे जो भी आपके टॉप 10 SKUs होंगे, सिस्टम खुद ही इसको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा कि आपके टॉप 10 SKUs कौन से हैं एंड दैट वुड बी हाईलाइटेड एज स्टार इन एप्लीकेशन. सो आपके जो टॉप 10 SKUs हैं दैट वुड बी हाईलाइटेड एज यू कैन सी. जो आपको 1, 2 और 3 नजर आ रहे हैं, दीज आर द टॉप 3 SKUs, टॉप 3 सेलिंग SKUs. एंड इस पे ऑब्वियसली जब ऑर्डर बुकर्स को ये विजिबिलिटी दी जाएगी, सो ऑर्डर बुकर्स वुड नो कि आपके टॉप सेलिंग SKUs कौन से हैं एंड इससे ऑब्वियसली वो फर्दर इन SKUs की सेल ड्राइव कर सकते हैं. And the last change that I would like to highlight is the visibility of must sell label in the SKUs tab. So previously आपके जो must sell SKUs आ रहे होते थे वो आपके separate tab में आ रहे होते थे. अब आपकी जो मेन SKUs की स्क्रीन है वहाँ भी आपके पास मस्ट सेल की विजिबिलिटी होगी एंड मस्ट सेल आप अब सिर्फ मास्टर SKU लेवल पे नहीं बल्कि आप UM लेवल एंड कैटेगरी लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं. एंड यू हैव अ filters to sort SKUs and alphabetical order or in trade price or retail price. So this is also a new feature that we have added. So this was all about the app, and if you have any questions then you may ask at the end of presentation or you may leave your message in chat. So thank you. Thank you, Suman. Okay, so basically that was let me share my screen. Yeah. So that concludes our second part of the agenda. Now I'll be talking about some of the minor system improvements that were done, जो कि आपके डे टू डे डेली ऑपरेशंस को थोड़ा सा फायदा पहुंचाएंगे एंड बहुत माइनर है, इसलिए हम लोगों ने इसको सिस्टम इम्प्रूवमेंट्स क्लासिफाई किया है.
ठीक है, so I'll just briefly explain what each of these are. एक है आपके asset module में updates हमने कुछ किए हैं. So for those customers who are using our asset module to tag their trade assets, उसमें हमने ये changes किए कि जो आपकी कुछ file attachments थी तो उसको हम mandatory या optional के checks हमने और build किए हैं उसके ऊपर for different store movements. ठीक है, अगेन दिस इज सेटिंग बेस्ड फॉर सो फॉर दोस्त जो नहीं चाह रहे कि मैंडेटरी हो तो वो इसको एज ऑप्शनल भी मार्क कर सकते हैं. ठीक है, the second thing that we've worked on is advanced tags based on filer non filer distributor. ये है कि आपका पहले तो अभी हम लोग स्टोर के ऊपर मार्क कर रहे थे as filer and non filer, but now we'll be able to mark it on distributor level as well कि ये आपका distributor filer है या non filer, and then उसकी certain advanced tag settings है that you can apply, and then again they'll be reflected in the invoicing eventually. ठीक है, अच्छा, the third thing that we worked on is reason for delivery man shortage और invoice settlement. अच्छा, अब क्या होता है कि जो आप लोग के डेली लोड फॉर्म सेटलमेंट आप लोग कर रहे होते हैं, आप लोग उस स्क्रीन के ऊपर डाल रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपकी 1000 रुपीज की इनवॉइस है एंड उसके ऊपर 800 कैश डिलीवरी मैन लेके आया है, सही है. सो जो आपका 200 का गैप है उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा जो डिलीवरी मैन शॉर्टेज लेके आया है. ठीक है, तो वो आप क्लियरली आप डिफाइन कर सकते हैं अपने रीजंस के क्या रीजंस हैं जो क्लासिफाई करते हैं आपके फॉर डिलीवरी मैन शॉर्टेज, एंड यू कैन टैग देम एट टाइम ऑफ इनवॉइस सेटलमेंट. ठीक है, सो दिस इज समथिंग वी वर्कड ऑन. Another thing, this will be beneficial for those users who are using our supervisor and app user assignment feature. So जो आपके अभी supervisors create होते हैं, supervisors are basically to classify order booker under an entity. तो जो सुपरवाइजर आप सिस्टम में क्रिएट कर रहे थे अभी, वो आपका एक एक करके फॉर्म के थ्रू वो होता था क्रिएट. सो पहले आप सुपरवाइजर क्रिएट करते थे, उसको ब्रांड भी असाइन करते थे, एंड देन आप उसको एक एक करके ऑर्डर बुकर भी असाइन कर रहे होते थे ऑल थ्रू अ फॉर्म जो यूआई था. ठीक है, बट नाउ वी क्रिएटेड बल्क अपलोड फॉर ब्रांड असाइनमेंट एज वेल एज आपका ऐप यूजर की असाइनमेंट भी एंड सुपरवाइजर की क्रिएशन भी. ठीक है, so another thing and the last thing that we worked on is improve real time journey tracking. उसके उस मॉड्यूल में हमारे बेसिक थोड़े फिल्टर्स का इशू था तो वो हमने फिक्स किया है. We've also worked on for those customers who are using our master app user feature, उनके लिए भी beneficial अब ये होगा कि master app user के अंदर भी proper आपकी tracking आ रही है. ठीक है, एंड उसके ऊपर हमने कुछ और सर्टेन KPIs ऐड किए on productive store pop-up. तो these are the new updates that we've done in the app user tracking module. Okay, so guys, that is about it regarding the system improvements, developments, app developments that we've done. And I would like to share with you the upcoming innovations that we'll be working on, and you can expect for the 5th December release आप कुछ ये वाले features expect हमसे कर सकते हैं. ठीक है, January and February वाले आपके are slightly subject to change, but these are the features that you can expect on 5th December from us. Okay, with that, I would like you all to drop in any questions that you have regarding this event, and we'll be happy to answer them. Right, so I've already seen a couple of questions, and answering to the bear's concern, I've attached a screenshot of where we can find the quantity of the FOC on the invoice. I've shared the picture, I've highlighted the box where we can see the quantity. There's another question related to system settings. I've explained how most of the settings that were mentioned in the demo were backend settings. That is, you'll have to ask your account managers to enable or disable them for you. So that's for the system settings. Another question was regarding the asset module update. So Salman would be answering the question before that. But for the asset module updates, there were certain settings that were required by the clients. That is,
कि asset movement में a certain type of movements were supposed to be made mandatory. उसके ऊपर attachment को mandatory करना था, so that was one of the improvement. Asset code on grid view and asset के attributes की visibility on the different grids की presence होना was one of the updates. So for details regarding these particular system improvements, you can contact your account managers and they can show you the design document or the design brief, and you can go through them and have questions about them, and the account managers will answer them on our behalf. Now Salman would be answering the other question. Yeah, so Hassan asked that many of the companies count delivery-based sales. So if it's possible to show the graph based on the delivery. So yeah, it's possible, but showing at the order value, the reason was to show at order value was that so that order bookers can have a quick visibility rather than waiting for the invoice to be settled. So that was the reasons that's why we kept on at order value, but yeah, we can change it to delivery as well. Adding upon to what Salman said, उसमें फिर आपका run time ज़ाहिर नहीं होगा, वो एक दिन आपका पुराना या कुछ अरसे पुराना आपका डेटा उसमें दिख रहा होगा. When will you have updates Salesflo Kotlin? अच्छा, we've already moved our application to Kotlin, so ये जो भी अब नए releases आ रहे हैं वो Kotlin वाले architecture के ऊपर ही आ रहे हैं. Is it FOC stock considered in sales? So जो आपकी FOC जो stock basically वो पूरा जो SKU है उसके against sale mark होनी होगी, जो आपका combo SKU बन रहा होगा. So उस collective SKU की contribution in sales होगी. ये जो FOC सवाल किया जा सकता है, भी लाइव क्वेश्चन किया जा सकता है या उसको चैट पे लिखा जाए? आपके क्या क्वेश्चंस हैं आप पूछ रहे हैं? FOC के बारे में पूछ रहा था मैं कि जो FOC यूनिट जो उसके साथ बंडल हुआ है, ये बेसिकली प्रमोशन का पार्ट है. जब आप 12/1 या 12/2 देते हैं तो ये प्रमोशन का पार्ट होता है. तो इसकी कोई ड्यूरेशन डिफाइन किया जा सकता है कि हम इस पर्टिकुलर दिन तक इसको डिफाइन इस पे जुबैर मैं क्लियर कर दूं कि ये प्रमोशन वाली जो आपकी 12/1 है वो आपके प्रमोशन मॉड्यूल से ही क्रिएट होगा. ये वो वाले SKUs क्रिएट होंगे जो कि आपके FOC उसके अंदर पैक होके आता है, एज अ इकट्ठा यूनिट पैक होके आता है पीछे से. श्रिंक रैप हुआ. जी. एंड उसका आपका कोड भी फर्क होता है SAP का, तो उसकी ओके अलग आ रही होगी. जी, अंडरस्टैंड. सॉरी, ठीक है. ऑलराइट. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चंस किसी के और है? Is option available for all created SKUs? नहीं, आपको इसको नया करना पड़ेगा. You can't edit an existing SKU and change it to a combination SKU, otherwise आपका previous transaction का data वो corrupt होगा इसके. So in this case either आपको new SKUs create करने पड़ेंगे या फिर अगर आपका base SKU already created है then आपको उसको inactive करके नया खोलना पड़ेगा. Any other questions? सलमान, आपने जो अभी जो ट्रेंड दिखाया था शॉप उसमें मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, अगर इसमें उस शॉप की उस दिन की डिमांड भी जनरेट हो जाए कि इसकी डिमांड क्या है तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा. अच्छा, फोरकास्ट आप कह रहे हैं, पहले से वो कर लें. नहीं, अच्छा सजेशन है, बिल्कुल इसको हम लोग आगे कर सकते हैं. ठीक है. हम ऐप पे और इनोवेशंस लेके आ रहे हैं तो हम आपको उसके बारे में भी अपडेट करते रहेंगे कि हम इसको किस तरीके से फिर प्रोग्राम करके लेके आते हैं. Any other questions किसी के? Otherwise we then proceed to concluding the session. अच्छा, question regarding claim, only claimable amount are reflecting the non-claimable. नहीं, only claimable. जो आपकी claimable promotions marked होती हैं at the time of promotion creation, only those are reflected in claims. बाकी नहीं होती हैं आपकी.
I hope that answered your question, Hassan. Okay. So if anyone else does not have any further questions, we can end this. And lastly, I would say कि आप लोगों ने पिछली दफा भी feedback हमें दिया था, we worked upon it. हमें अच्छा लगा कि आप लोगों ने थोड़ा सा time निकाल के हमें feedback दिया. हम फिर से चाहेंगे and encourage करेंगे कि please हमें feedback दें ताकि हम ये sessions को और we make it more informative and थोड़ा सा आपके लिए और बेहतर लेके आए इसके अंदर content. Okay, so thank you everyone for joining, and we'll meet again in our next release then. Thank you everyone for your time.